Hello everyone, welcome back to my new vlog. So this is the Diwali special vlog and पिछले कुछ दिनों से I was not able to record. Basically एक दिन पहले I was not able to record much. मैंने सारे clips रख लिए थे but मैंने voice over नहीं किया था. The reason is this because we were hosting few people a day before Diwali. And because of that बहुत सारे arrangements होते हैं and we had to plan few things because of which we were not able to do it. एंड मैंने जितना भी आपको पहले का मैंने आप सबको दिखाया था तोरण और ये सब चीज़ें हमने पहले ही लगा लिया था. एंड दिवाली से एक दिन पहले फिर हमने ये सब लाइटिंग्स और इन सब का सब फिटिंग कर दिया था. सो दिस इज़ हाउ वी डेकोरेटेड आवर पोर्च एरिया एंड हाउ वी डेकोरेटेड आवर बालकनी एरिया एंड आवर लॉबी. So Diwali is always super fun. I just love the Diwali vibe, the lights, sweets, good catch up, then meeting friends, playing Uno, or a few people play. A lot of people, I must say, play Teen Patti also, and this is how I decorated my platter basically because लोग Uno खेलते हैं. Uno के साथ साथ हम लोग we could have some munching as well. So and the dinner was organized later. First we were planning to play Uno, having some snacks, and then dinner. And I'll tell you one thing, डिनर करते करते हमको 2 बज गए थे रात के. So I mean basically सुबह के 2 बज गए थे. So yeah, it was super fun. It was a crazy night and this was the night before Diwali. So मैंने पूरी clip सबको merge कर दिया है. The night before Diwali and then Diwali night, everything I've just merged it all in, and I'm showing everything on loop because I'm so obsessed. I'm so obsessed with it. So yeah, few people were celebrating Diwali on 21st, but we celebrated it on 20th. And this is how I did my corridor, जो भी मैं plan करी थी आप सबको पता ही है अपने free time पे. And this was the setting so that कुछ लोगों को अगर outdoor बैठने का मन करे while having their snack, so they can go on the outdoor as well. And this is how I decorated my dining table, my mandir, of course. And I'm showing each and every angle because again I'll tell you I'm obsessed, simply obsessed with the Diwali decoration. Other festivals ek taraf and Diwali ek taraf, because Diwali has something, undoubtedly it has something. So yeah, this is how I light up each and every corner of my space. And then we had a good time chit chatting with friends, played Uno, and of course I did lose because in Uno I never win. वो कभी by luck हो जाता है कि 3-4 गेम में एक गेम में जीत जाऊँ. And this is the Diwali morning. I started my morning making rangoli, and as I told you that I have stencils, so yeah, this is how I'm going to tell you stencils कितने useful होते हैं. See how beautiful it has been laid out. So everything has been made with the help of stencils. मैंने because बहुत से लोग अपने हाथ से, and this is yes, and this is Shera, the condition of Shera on the Diwali decoration day. बिकॉज अगर ये रंगोली देख लेता तो ये सबको अटैक करके बिल्कुल सब ख़राब कर देता, जैसे कि इसने पिंक वाली ख़राब कर दी है. सो या दिस वॉज द दिवाली नाइट एंड दिस इज़ पंचमुखी दिया विच आई टोल्ड यू, जिसमें से 1-2 दिए मेरे ख्याल से बुझ भी गया है. एंड या दैट पिंक वन इज़ डन बाय शेरा. उसको हमने ऐसे छोड़ दिया एंड वो उसने पूरा रंगोली ख़राब कर दिया था. सो दिस वॉज द नाइट, दिवाली नाइट. एंड उस दिन हम लोग वी डेकोरेटेड आवर होम, देन वी वेंट टू मीट पीपल, गिव देम गिफ्ट्स जो भी हम लोगों ने उनके लिए लिया था एज अ स्वीट जेस्चर, एज अ टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. सो दिस वॉज द लिविंग एरिया डेकोर. एंड आज जो मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा था उसको मैंने आज नीचे सेटअप लगा दिया था. The corridor and very cozy vibe, very dim vibe I wanted to plan for Diwali. So yeah, this is how we did it. And the best part, the best part, this is my favorite corner. This is my most favorite corner. And इसमें मैंने basically दिया नहीं जलाया, इसमें मैंने that light ही लगा ली थी, that what we call it, that cell lights. And this was my Diwali look. I chose to, earlier I was thinking to wear sari, but then with all the arrangements and everything, it is not possible at all to carry sari. So yeah, chose suit. And look at these beautiful flowers. I'm so obsessed with it. I'm so obsessed with the corridor. Practically so obsessed. Again, Shera. Look at him. Just look at his face.
So yeah, this was the entire decoration for Diwali. I hope you must have all liked it and how we just laid it down. डे 1 में मैंने यहाँ पे दिए जलाए थे. डे 2 में लाइक दिवाली नाइट के दिन इसमें थोड़े फ्लावर पेटल्स लगा लेते हैं. आई यूज येलो कलर, देन रोज पेटल्स एंड ऑरेंज कलर मैरीगोल्ड फ्लावर पेटल्स. So all made with stencils. See how beautiful. All made with stencils. कुछ भी आपको कुछ नहीं करना होता है, बस उसको लगाना होता है, ऊपर से पाउडर करना होता है, एंड देन योर रंगोली इज़ मेड. सो या आई थिंक within 1 hour I was able to make the entire rangoli thing, सब कुछ. So this is how I made my Diwali. दिवाली फॉर मी इट्स ऑल अबाउट डेकोरेशन डेकोरेशन डेकोरेशन. एंड ये डेकोरेशन 1-2 हफ्ते तक रहती है. मैनी पीपल जस्ट रिमूव इट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, बट हम सोच रहे हैं कि हम इसको 1-2 हफ्ते तक रखेंगे एटलीस्ट, बिकॉज दिवाली के दिन आप लोग उसको बस लगाते हैं फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द पीपल ऑल्सो, टू वेलकम पीपल. बट आई थिंक वी मस्ट enjoy the thing that we have made for our home. So yeah, this setup will be there for coming 1 week. And after that, after meeting everyone, we went for a long drive. Reach back home, click selfie, and see you in the next vlog. Bye.